Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome in the third lecture of research methodology. Today we will mainly talk about scientific research method. Means what are the method through which we can conduct our research. Okay. Uh, until now, what you have done under the undergrad level or at the beginner level were acceptable, but now you people are going to enter in the very competitive and very mature stage of research. So each and everyone should know about that how we can select our methods and how much it is important when we are going to connect our method with a scientific research method, okay, for the solving of any research problems. So we have different ways of a method like intuition or like belief. Intuition means the ability to know something directly without any analytic reasoning, okay, or like whatever we do believe, like is we Muslim, like most of the people we all are by birth Muslim, so we don't know the like apart from the basic concept we have very much idea or expertise about the religion. And the second thing is consensus, where majority, like consensus means majority of the people opinion, okay. Like if we can construct the same definition to the any city like transportation problem, like like if someone tell you what is consensus mean, like the consensus among city transportation planner and transport congestion and traffic planner uh, increases or imitated that in Peshawar the traffic will be increased by 2% in the year 2021. So this is consensus. So like means majority of the people opinion. The third one we have the casual observation. Okay, the situation where less research is uh, unrealistic, which is cost prohibitive, or would individual affect the subject or a person. Okay, ठीक है ना. And the fourth one we have the informal logic. So we if we can regarding casual observation, like something which we like individual subject could be or like person can be changed to the destructive testing and non-destructive testing. So like these are some type of a casual observation. And the fourth one we have the informal logic. So if we want to elaborate that what is formal logic, what is informal logic. So in the informal logic we usually evaluate the content of arrangement of the argument, while in the formal one we usually evaluate the structure of the argument. Okay, so number one, in the formal we evaluate the structure of the argument, while in the informal logic we usually evaluate the content of the argument. Okay, and informal logic is mainly based on the practice of interpretation of the interpreting or defining according to different scenarios, different thoughts, different ideas, different people perspective. While formal logic from the top to the down, it is always based on the symbolic notation, where we usually use the symbol to elaborate the scenarios, the situation. And then we have like opinion, we have evidence, we have like the flawed, we have the bias concept as well. Okay, flawed or like bias means a fundamental weakness or imperfection. Bias means which is a prejudicial और unfair thoughts. जैसे आपको आप लोगों ने अगर देखा हो कभी कभार जब लोगों से हम लोग मिलते हैं तो हम लोग इन उनके बारे में एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक ओपिनियन बना देते हैं विदाउट नोइंग देम. ओके, सॉरी. So next one is scientific methods. Okay, so
the method, it could be, as we already define in a very detailed formal logic. And the second one is systematic observation. Systematic means where each and everything is completely based on the theories, on the evidence, on something which really makes sense, and we can counter them as well. Okay, सो व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक? नंबर वन, जो सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल साइंटिफिक मेथड का, दिट शुड बी एम्पेरिकली टेस्टेबल। एम्पेरिकली टेस्टेबल मतलब ताकि अगर हम उसको करना चाहे मतलब तजुर्बाती तौर पर, सो इट शुड बी वैलिड। एम्पेरिकल बेसिकली मीन्स हाइपोथेसिस, the method. Testable means which could be re-justified, which could be re-valid, which could make sense. Okay, uh, so we were talking about empirically. Empirically testable means which is completely valid, which is counterly valid. अगर हम उसको counter करना चाहे, देखना चाहे, पढ़ना चाहे, तो it should give us the same result. The second is replicability. replicability क्या है? थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। The ability of a scientific expert or trial which is to be related to obtain a consistent result. अगर हम लोगों ने कोई भी एक मेथड की, एक ही सीरीज की कोई भी रिजल्ट अगर हम लोगों को चाहिए, तो आपके रिजल्ट में, आम से अल्फाज में, आपके रिजल्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए। आम से अल्फाज में मतलब ये है that your work, your scientific method, it should justify all those six qualities. थर्ड नंबर पर है हमारे साथ objectivity, a concept which is independent from individual subjectivity, पर्सनल इमोशन और इमेजिनेशन। जैसे हम लोग कह देते हैं ना, अगर आप लोगों को याद हो, जो जिन लड़कों ने मेरे साथ पेमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन लिया था, आई हैव ऑलरेडी थॉट देम लिटिल बिट अबाउट हाउ टू राइट साइंटिफिक वेज। सो एक दफ़ा फिर से, अगर कहीं पर भी आ जाए कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें किसी डेट का जिक्र हो, फिगर का जिक्र हो, मतलब ये है दैट वी आर रेफरिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी। सो वहाँ पर वी कैन नॉट प्री जज, वी कैन नॉट एस्टिमेट, वी कैन नॉट यूज़ और बिलीफ, वी कैन नॉट यूज़ और जजमेंट। ठीक है ना? सो इट शुड बी वैलिड, इट शुड बी काउंटरली वैलिड। अगर कोई उसको देखना चाहे, सो दिट शुड बी अवे फ्रॉम द पर्सनल इमोशन, दिट शुड बी अवे फ्रॉम द इमेजिनेशन। ठीक है ना? सो वहाँ पर कंसेप्ट होना चाहिए जब हम लोगों ने कोई भी साइंटिफिक काम करना हो। अच्छा, फोर्थ नंबर पर है हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी का आम से अल्फाज में ये है कि दूसरे लोग सिर्फ ये देख ले कि हम लोगों ने क्या किया है। इजी फॉर अदर टू सी वट एक्शंस और परफॉर्म। अगर आपने देखा हो, बहुत सारे इदारे, इंस्टीट्यूशन, यूजुअली उनका ये मोटिव होता है दैट और डिपार्टमेंट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना जी? तो ट्रांसपेरेंट का ये बेसिकली मतलब है। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर है हमारे साथ फॉल्सिफिबिलिटी। फॉल्सिफिबिलिटी आम से अल्फाज में जब हम लोग कहते हैं कि ये आदमी थोड़ा सा जाली है या फेक है, तो ये दिस स्पेसिफिक टर्म इज referring toward that ability. Okay, the observation use which is completely on the falsible and which is like जो बिल्कुल गलत हो, और तो उसको हम लोग कहते हैं falsifiability। आप लोगों को अगर किसी को थोड़ा सा डाउट हो, तो आप लोग थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हो इस वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए। लेकिन नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में हम थोड़ा सा इसको मज़ीद भी एक्सप्लेन कर देंगे। नंबर 6 क्या है? लॉजिकली कंसिस्टेंट। इफ़ दे ऑल कैन बी ट्री, इफ़ दे ऑल कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। मतलब यह है कि वो
आप लोगों ने शायद सुना हो कि हम लोग कहते हैं कि दिट डजंट मेक अ सेंस, दिट डजंट मेक ए लॉजिक, तो ये वो वाला लॉजिक है। मतलब ये है कि लॉजिकली जो हो वो कंसिस्टेंट हो, वो मुकम्मल हो, वो कामिल हो। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको एक दफ़ा फिर जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा एक दफ़ा इज आई हैव एलिबोरेट एंड एक्सप्लेन all the six method of scientific elaboration, but we will just go through it again. Okay, so empirically testable कि हम लोग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले तो उसका हमारे पास फिजिकली एविडेंस हो। तो मतलब ये है, इसमें दो चीज़ें हैं। एम्पेरिकल का मतलब ये है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, टेस्टेबल का मतलब ये है कि इट शुड बी कॉन्ट्राडिक्ट, इट शुड बी काउंटरली वैलिड। नेक्स्ट है हमारे साथ रिप्लेसेबिलिटी। इट शुड बी पॉसिबल टू रिपीट द ओरिजिनल स्टडी एंड गेट, मतलब यह है कि जो आप कह रहे हो अपने स्क्रिप्ट में, अगर कोई उसको दोबारा करना चाहे तो वो हमें एग्जैक्टली वही जवाब दे। जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो सिमुलेशन का, मॉडलिंग का, तो कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो वहाँ पर स्ट्रेसेस, स्ट्रेन या फॉर एग्जांपल डिफॉर्मेशन हमारे मॉडलिंग की एरर की वजह से वो थोड़ा सा कम आ जाता है। तो फिर हम लोग उसको बढ़ाते कैसे हैं? वी इंक्रीज देयर द नंबर ऑफ आइट्रेशन। मतलब ये है कि अगर एक ही जगह पर 10 टाइम कोई लोड हिट करेगा तो उसके स्ट्रेसेस अलग होंगे। आइट्रेशन का मतलब यह है रिपीटिशन ऑफ द सेम फंक्शन। अगर मैं उसी आइट्रेशन को लगा दूँ 1000 टाइम्स तो उसके स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन के जो रिजल्ट होंगे वो अलग होंगे। तो ये रिप्लेसेबिलिटी का जो टर्म है, दैट इज रेफरिंग और लाइक रेफर टूवर्ड यू देयर। नेक्स्ट है हमारे साथ ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, इस के हम लोगों ने बड़ा डिटेल में कह दिया है कि जो भी रिजल्ट हो हमारे साथ, इट शुड बी इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द एजम्पशन। मतलब ये है कि आपने अगर कोई एजम्पशन लेना है, कोई पैरामीटर्स लेने हैं, तो वो जो हो वहाँ पर क्लियरली मेंशन हो कि इस बुनियाद पर देखो। हर एक स्टडी में लिमिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो फॉर एग्जांपल जो रिसर्च करते हैं, आप लोग अपने हाथ की आप लोग के हाथ में जो फॉर एग्जांपल बंद बने हुए हैं, तो हम लोग बेसिकली वी आर यूजुअली इन ईच एंड एवरी स्टडी वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अ वेरी टाइनी प्लेस, एक बहुत सी छोटी जगह पर हम लोग फोकस करते हैं। तो स्टडी में आपने एग्जैक्टली अपनी स्टडी की लिमिटेशन और जिन चीज़ों को आपने कंसीडर किया है उन्हीं एजम्पशन को आपने बड़ा क्लियरली मेंशन करना होगा। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि इट इज़ इजी फॉर अदर दैट व्हाट यू हैव डन, कि जो कुछ आपने किया हो तो वो वहाँ पर डिफाइंड भी हो, वहाँ पर उसका जिक्र भी हो, उसी का प्रोसीजर भी हो, उसकी थ्योरी भी हो, उसका बैकग्राउंड भी हो। ठीक है ना जी? तो इसका ये मतलब है ट्रांसपेरेंसी का। नेक्स्ट है हमारे साथ फॉल्सिफेबल और फॉल्सिफेबिलिटी। हाइपोथेसिस शुड बी फॉल्सिफल, मतलब ये है कि जो जो हाइपोथेसिस आप लगा रहे हो वो वैलिड हो, वो काउंटर हो, देर इज़ नो प्लेस फॉर द इमेजिनेशन। ठीक है ना जी? तो नेक्स्ट वन हमारे पास है लॉजिकली कंसिस्टेंट। मतलब ये है कि वो लॉजिक के लिहाज से भी मंतक के लिहाज से भी वो मुकम्मल हो। ठीक है, देयर शुडन बी नो इंटरनल और एक्सटर्नल contradiction, so it should be consistent. Researcher should be clear about what counts as confirmation and contradictory evidence are behind that specific approach. नेक्स्ट वन हमारे पास है अब अच्छा, अब ये आप लोगों के 6 मेथड हो गए रिसर्च के। नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड का ये मतलब है कि जो काम आप कर रहे हो उसका आम से अल्फाज में उसका इफ़ेक्ट कहाँ पर है। मतलब ये है कि वो अप्लाइड रिसर्च है, वो बेसिक रिसर्च है। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद हो, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था लेक्चर नंबर 2 में अप्लाइड रिसर्च के बारे में भी और बेसिक रिसर्च के बारे में भी। ठीक है ना? और नेक्स्ट ये है कि आपकी जो स्टडी है वो कितनी क्रिटिकल है,
उसकी इम्पोर्टेंट कितनी है और वो लोगों के लिए कितनी कारामद हो सकती है। साइंटिफिक एटीट्यूड का ये मतलब है। अच्छा, साइंटिफिक क्लेम्स कहाँ कहाँ पर हमारे पास पॉसिबल है? तो ऑब्जर्वेशन भी हो गए जो शायद सही हो या शायद गलत हो। आम से अल्फाज में जब हमारी कोई स्टडी सर्वे बेस हो या ऑब्जर्वेशन बेस हो या हम उसमें दूसरे लोगों से कुछ ना कुछ इनपुट कंसीडर कर ले, तो उसकी वहाँ पर क्या नॉवेल्टी है या क्या उसका यूज़ है। अच्छा, साइंटिफिक क्लेम्स में हमारा हम लोग जो आप लोगों ने जो हाइपोथेसिस सेलेक्ट करना हो, तो वो उसी सिचुएशन के मुताबिक में बेस्ट हो। हर हमेशा के लिए आप लोग अपने आप से सवाल कीजिए, जब कभी आप लोगों ने कोई फॉर एग्जांपल कोई काम करना हो, जब हम लोग फोर्थ स्टेज पर आ जाते हैं मेथडोलॉजी पर, तो जब हम लोग हाइपोथेसिस सेलेक्ट करते हैं, सो यू शुड नो दैट व्हाई यू सेलेक्ट दैट स्पेसिफिक मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ, मतलब साइंटिफिक क्लेम में कि जो हमारी हाइपोथेसिस है, इट शुड रिप्रेजेंट और प्रिसाइज एंड एग्जैक्टली द सेम जो हमारी प्रॉब्लम की हमारे प्रॉब्लम का जो बेसिक पार्ट है। मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि आप जो मेथड सेलेक्ट कर लो वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो गलत हो या वो वहाँ पर फिट ना हो रहा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ नए टर्म सीखे होंगे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अटेंडेंस के लिए